बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है आपके सामने स्क्रीन पे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स वर्सेस ट्रांसवर्स वेव्स। तो ऐसा क्या होता है कि स्टूडेंट्स को लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स का डिफरेंस समझ में नहीं आता। अक्सर ये ऑब्जर्व किया गया है कि वेव्स के टॉपिक में जब ये डिफरेंस पे बात की जाए, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स, तो स्टूडेंट को ये क्लियर नहीं होता। तो आज की क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स में बेसिक डिफरेंस जो है वो क्या है। सो लेट अस स्टार्ट। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स का डिफरेंस क्लियर करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट को क्लियरली ये पता होना चाहिए, ऑल ऑफ यू मस्ट नो व्हाट आर वेव्स। रिमेंबर, वेव्स आर एनर्जी कैरियर। Waves carry energy. Whenever waves travel in a medium, they disturb that medium. So there is disturbance in the particles. हर मीडियम के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब एनर्जी ट्रेवल करती है किसी भी मीडियम के अंदर, तो उस मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है। यहाँ डिस्टर्बेंस किस चीज में होती है? मीडियम के अंदर मौजूद एटम्स और पार्टिकल्स में। हम उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करेंगे पार्टिकल्स। So waves produce disturbance in that medium in which waves is traveling. Let us consider these waves. These are longitudinal waves. इस डायग्राम में आपको बहुत सारे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। दे आर ट्रेवलिंग। ये डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपस में कोलाइड भी कर रहे हैं, ये एनर्जी को लेके जा रहे हैं। When they collide with each other, they transfer energy. Remember, these are sound waves. एंड साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। जब ये पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं, ये एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और एनर्जी को आगे लेकर जाते हैं। आप गौर से देखें, आपको इन पार्टिकल्स में, इस वेव्स में बहुत सारे पोर्शंस ऐसे दिखाई देंगे जहां पार्टिकल्स के दरमियान गैप कम है। याद रखें, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में इसको कहते हैं कॉम्प्रेशन। कुछ आपको ऐसी रीजन दिखाई देंगे जहां पार्टिकल्स के दरमियान गैप ज्यादा है, that are known as rearfaction. एक काम करते हैं, इसका मजीद माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं। These are longitudinal waves. Longitudinal waves में ये है डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स, मोशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद साउंड। ये है डायरेक्शन ऑफ साउंड, यानी साउंड इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। वो पोर्शन जहां पे पार्टिकल्स बिल्कुल करीब करीब हैं, दे आर क्लोजर टू ईच अदर, नोन एज कॉम्प्रेशन। सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रेशन। वो रीजन जहां पे पार्टिकल्स के दरमियान गैप ज्यादा है आर नोन एज रियरफैक्शन। सो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्रेशंस एंड रियरफैक्शंस। ये वाला व्यू देखें, दीज आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। कंसीडर दीज बॉल्स आर द पार्टिकल्स। व्हेन sound is traveling in a medium, the particles disturbed. These particles collide with each other, and it is clearly shown in this diagram. These particles are colliding, vibrating, oscillating in back and forth. Look at this. The vibration is like this. So this is the direction of particles, the disturbance of particle. Particles are disturbing back and forth, forward and backward. And you can clearly see that the energy is traveling in forward direction. So this arrow represents the direction of the wave. Disturbance of particle and direction of wave both are parallel to each other. Whenever waves is traveling in a medium, these waves disturb that medium and there is disturbance in the particle. When particle oscillates back and forth, waves travel in forward direction. So the disturbance of particle and the direction of wave are parallel to each other. Whenever the disturbance of particle and the direction of wave are parallel to each other, remember, these kind of waves are known as longitudinal waves. In longitudinal waves,
These are the disturbance of particles. Look at these arrows. These are the disturbance of particles. And this is the direction of wave. Look at this arrow. So it is clearly seen that the disturbance of particles and the direction of wave both are parallel to each other. Whenever the disturbance of particle and the direction of wave are parallel to each other, such a wave is known as longitudinal waves. These are longitudinal waves in a spring. It contains compression and rarefaction. These are longitudinal waves in a helical spring, slinky spring. Longitudinal waves and transverse waves. Longitudinal waves, it consists of rarefaction and compression. Now, these are transverse waves. So look at this diagram carefully. You are observing balls of red colors. These balls are oscillating in vertical direction, up and down, and the energy is traveling in forward direction. These waves are transverse waves. Look at the disturbance of the particles. The disturbance of particle is in vertical direction, and the energy is traveling in forward direction. So it is very much clear in this animation that the disturbance of particle and the direction of wave are perpendicular to each other. When the disturbance of particle and the direction of wave are perpendicular to each other, such a wave is known as transverse waves. The best example of the transverse waves is in front of you. The sea waves, water waves are the best example of the transverse waves. So in transverse waves, this is the disturbance of particles, and this is the direction of wave, and it is clear that the disturbance of particle and the direction of wave are perpendicular to each other. When these two are perpendicular to each other, such a wave is known as transverse waves. Look at transverse waves in a spring. These are transverse waves. Transverse waves consist of two portions. The upper part of the wave is known as crest. The lower part of the wave is known as trough. So transverse waves contain crest and trough. Longitudinal waves, transverse waves, longitudinal waves, transverse waves. These are the comparison between longitudinal and transverse waves. Longitudinal waves, longitudinal waves, transverse waves. This is the difference between longitudinal waves and transverse waves. Hope all of you understood what is the difference between longitudinal waves and transverse waves. So waves are basically the energy carrier. When waves travel in a medium, they disturb that medium. There is a disturbance in the particles of medium. Whenever the disturbance of particle in a medium is parallel to the direction of wave, longitudinal waves, and the disturbance of particle is perpendicular to the direction of wave, such a wave is transverse waves. Thank you. Allah Hafiz.